Okay. So for case 2, we have if temperature is different. Now, when temperature is different, so again I am having this two bulbs. This is your one bulb and this is your second bulb. This is your knob. Let's say the first bulb contains 20 grams of H2 and second bulb contains 160 grams of, okay? And आपने इन दोनों को एक थर्मोस्टैट से क्लोज करके रखा हुआ है. दिस इज योर थर्मोस्टैट. थर्मोस्टैट क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है. तो दोनों तरफ देयर इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर. In this case, volume here is 10 liter and temperature is 300 Kelvin. This is for bulb A. Bulb B के लिए volume is 15 liter, temperature is 400 Kelvin. This is your bulb B. बाहर का जो भी स्टेट है इसको हम बोल देते हैं दिस इज योर थर्मोस्टैट. It maintains the constant temperature. काम ही thermostat का है कि to maintain the constant temperature. Now you have to find out, first calculate the pressure in both the bulb when knob is closed. आपको अगर बंद कर देंगे तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है दोनों में कितना होगा. एंड सेकंड केस में calculate pressure in both bulbs when knob is opened. Pressure and as well as number of moles कर दो. And also calculate number of moles in both bulbs. पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली हो जाना चाहिए. सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, बट इफ यू थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यू विल गेट द आंसर. सॉल्व करो. ओके चलो देखो. I am explaining. Try to solve the question. Okay. So
तो यू हैव दीज टू बल्ब्स, जब तक नॉब क्लोज्ड है तब तक तो कोई इशू ही नहीं। आप सिंपली प्रेशर निकाल लोगे कंटेनर ए में, PV इज इक्वल टू nRT लगा के। ओके, सो यू विल हैव नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स 10 होंगे, R का वैल्यू 0.08 ले लो, टेम्परेचर इज 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम व्हिच इज योर 10, तो आंसर हो जाएगा 25 ऐसे। अगर मुझे प्रेशर बी का निकालना है तो मोल्स निकाल लो, मोल्स विल बी 5, आर का वैल्यू 0.08, टेम्परेचर इज 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 50, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 11.1 atm। जब तक बल्ब क्लोज है तब तक कोई इशू नहीं होगा। ओके, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है संपदा। ओके, आप लोगों ने 0.0821 करके लिया होगा तो 24 आ रहा होगा। ओके, मैंने 0.08 लिया है, तो इस यूजुअली एक्चुअली ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं वही बोल रही थी, अगर ऑप्शन में वेरिएशन कम है, ओके, चेंज काफी कम है, देन आप हमेशा 0.0821 ही लो। ठीक है, फाइन। दूसरा केस बोल दिया आपको कि बल्ब आपने क्या कर दिया है, जो नॉब है नाउ इट हैज ओपन, एंड नॉब ओपन जैसे ही करोगे तो ऑफ कोर्स जहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ से आपके पास गैस मूव होना चालू हो जाएगा दूसरे साइड पे, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब तक दोनों तरफ मोल सिमिलर ना हो जाए या प्रेशर सिमिलर ना हो जाए तब तक आपके पास गैस मूव करेगा। ओके, नाउ बात यहाँ पे ये कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब टेम्परेचर सेम था तो हमने वॉल्यूम को ऐड कर दिया था, दोनों के वॉल्यूम को 10 + 15 25 कर दिया था, बट यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट है, तो क्या हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, यस और नो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो रहा है टेम्परेचर से, मतलब इनवर्सली रिलेटेड है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो जो भी अगर मैं वॉल्यूम को चेंज ऐड कर पा रही हूँ दोनों को, तो मेरे को टेम्परेचर को भी ऐड कर होना चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है, तो टेम्परेचर को तो हम सिंपली ऐड कर नहीं सकते कि हम मैं 300 और 400 को ऐड कर दूँ और मैं बोलूँ ये टोटल टेम्परेचर है कंटेनर का, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं टेम्परेचर को ऐड नहीं कर पा रही हूँ तो क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पहली बात तो ये होने वाला है। ओके, एंड वी कैन नॉट ऐड द वॉल्यूम एज टेम्परेचर इज डिफरेंट। ओके, हम वो भी नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या करना है। कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली अगर मैं बल्ब ए की बात करूंगी और यहाँ पे बल्ब बी बात कर लेते हैं, तो प्रेशर तो दोनों में सेम हो जाएगा, बिकॉज तब तक गैस फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम 10 लीटर, यहाँ पे टेम्परेचर 400 केल्विन है, वॉल्यूम 15 लीटर है। मान लेते हैं क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा था, ए बल्ब का प्रेशर ज्यादा था, तो यहाँ से यहाँ जो भी मोल्स आपके गए हैं वो एक्स मोल्स ट्रांसफर हुए हैं गैस के, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोल्स हो जाएगा 10 माइनस एक्स। इस पर अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगी पीवी इज इक्वल टू nRT, तो दिस बल्ब का इक्वेशन हो जाएगा P इंटू 10, एन की जगह हो जाएगा 10 माइनस एक्स, आर की जगह 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 300। दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, यहाँ के मोल्स अब कितने हो जाएंगे, पहले 5 था, x इसने यहाँ से गेन किए हैं, तो टोटल मोल्स 5 + x हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो p इंटू 15 वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 + x इंटू 0.0821 इंटू 400। Let's say this is your equation. Now what I am going to do is dividing 1 by 2. I will have p into 10 divided by p into 15 is equal to 10 minus x into 0.0821 into
300 divided by 5 plus x into 0.0821 into 400. ये तो कैंसिल आउट हो गया, पी कैंसिल आउट हो गया 2/3, देन 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 3/4। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू, कि कितने मोल्स ट्रांसफर हुए हैं। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितने मोल्स हैं, और फिर हम p का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स into 3 divided by 5 plus x into 2, which will become 8, 5 plus x, 9, 10 minus x. ये हो जाएगा 40 plus 8x, ये हो जाएगा 90 minus 9x. x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, that will be 50/17, which is approximately 3 आ रहा है, approximately 3 वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम बल्ब ए टू बल्ब बी टू इक्वलाइज द प्रेशर। वी कैन से दैट 3 moles are moving from bulb A to bulb B. Is it clear? तो moles इन बल्ब ए में मोल्स कितने बचेंगे, पहले 10 थे, 10 में से आपने 3 हटा दिए, 7 मोल्स। एंड मोल्स इन बल्ब बी कितना हो जाएगा, पहले 5 था, 3 उन्होंने ले लिया, 8 मोल्स। ये जरूरी नहीं कि आप ये समझो कि वैल्यू दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे प्रेशर सेम करने के लिए, नहीं, गैसेस अलग है तो वो अलग कोलाइड करेंगे, अलग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने क्वेश्चन में बोला था। अब बोला था कि प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर आप किसी भी एक कोई भी एक इक्वेशन ले लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि दोनों में प्रेशर इक्वल है। अब तो प्रेशर पहला वाला मैं बल्ब लेके कर रही हूँ, बल्ब बी लेके भी करोगे तो भी सेम आएगा। वॉल्यूम इज 10, एन का वैल्यू होगा नाउ 10 माइनस 3, आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 300। यहाँ से जब प्रेशर का वैल्यू निकालोगे तो यू विल हैव, ये तो कैंसिल हो गया, 0 तो मल्टीप्लाई करोगे 721 210 into 0.08, so that will be 17.58। बात समझ में आया? Let me know the question is clear or not. So इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपका बेसिक नॉलेज चेक करेगा क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है क्वेश्चन कैसे लगाना है, यू विल गेट थ्रू दिस। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज योर Dalton's law of partial pressure. ठीक है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases in a container of volume V at temperature is equal to
summation of partial pressure of component gases present in the mixture. What this statement is saying that कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर. सो लेट्स से आई हैव दिस कंटेनर, मेरे पास लेट्स से गैस 1 2 3, दीज आर गैसेस. ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ओके, तो इसका खुद का प्रेशर लेट्स से P1, 2 का प्रेशर P2 और 3 का प्रेशर लेट्स से P3 है. तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा इस कंटेनर पे दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ P1 P2 प्लस P3. सो आई कैन राइट डाउन हियर P total is equal to P1 P2 P3 and depending upon जितने भी गैसेस है, मान लो इन्फिनाइट गैसेस है, वी डोंट नो. So this is your total pressure and this is partial pressure of gas 1. Okay, जो भी उसका इंडिविजुअल प्रेशर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर. दिस इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. छोटा सा क्वेश्चन करो यहाँ पे, to which of the following where Dalton's law of partial pressure is not applicable. Option A, helium and neon. Option B, N2 plus O2. Option C, H2 plus Cl2 and option D, Argon plus F2. सीधे आंसर, इनमें से कौन सा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होगा? यस ब्रो, का आंसर करेक्ट है. जयिता इज राइट, स्निग्धो रॉन्ग है, स्मरणिका इज करेक्ट, नव्या का आंसर भी करेक्ट है, सुहान रॉन्ग, सिंचना का गलत है. देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन्हीं गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो आपस में रिएक्ट ना करे. अगर वो रिएक्ट कर गए तो कुछ नया ही प्रोडक्ट बना देंगे ना, फिर तो पार्शियल प्रेशर एवरीथिंग का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा. तो आंसर होगा सी. सी के केस में H2 और Cl2 आपस में कंबाइन करके फॉर्म कर देंगे 2HCl. अभी तो कोई लॉजिक ही नहीं बचा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, है ना. तो नहीं नहीं, N2O2 रिएक्ट नहीं करते. दीज आर इनर्ट गैसेस ब्रो. नॉर्मल कंडीशंस में दे वोंट रिएक्ट. ओके, आपको अच्छा लग रहा होगा N2O NO ये सब बना देंगे. नो, दे डोंट रिएक्ट सिंपली. N2 and O2 सिंपली रिएक्ट करके NO और NO2 नहीं बनाते. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So what is the logic here? They should not react with each other. अगर react कर गए तो पार्शियल प्रेशर का सब लॉजिक जो है वो वहीं पे फेल हो जाएगा. Okay, now let's write down the definition of partial pressure. Pressure exerted by an individual
gas present in same container at same temperature is known as partial pressure ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें से एक इंडिविजुअल गैस सेम कंटेनर पे एट सेम टेम्परेचर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इट्स पार्शियल प्रेशर. लेट्स से आई हैव अ कंटेनर हियर, इसमें दो गैसेस हैं. ओके, लेट्स से गैस 1 एंड गैस 1 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है एंड गैस 2 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2. अगर आपसे पूछे कि इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. हमको नहीं पता, मोल्स पता है, प्रेशर नहीं पता, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना है वी डोंट नो. हमको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन. अगर मुझे पी टोटल निकालना है, जो भी उसका वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स हम ऐड कर सकते हैं दोनों गैसेस की, आर और टी. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1 टोटल गैसेस के लिए. नाउ फॉर गैस 1, गैस 1 के लिए P1 किसके इक्वल हो जाएगा, लाइक P1V विल बी इक्वल टू N1RT. टेम्परेचर तो सेम ही है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. और गैस 2 इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, P2V इज इक्वल टू N2RT. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 3. तीन इक्वेशन हो गया. नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P1V प्लस P2V इज इक्वल टू N1RT प्लस N2RT. P1 प्लस P2 V कॉमन ले लो, N1 प्लस N2 RT कॉमन. अब अगर लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 4. नाउ आई कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4. यहाँ पे भी v है, ये भी v है. इसका मतलब है कि p टोटल किसके इक्वल हो गया, p1 प्लस p2. तो यहाँ से हम डिराइव करके ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से टोटल प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस. नाउ मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, आप लोग फर्दर डेरिवेशन कंटिन्यूएशन में ही करना. ओके, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. 2 में से सिंपली 2 माइनस 1 अगर हम इक्वेशन कर दे तो हमको क्या मिलने वाला है, P1V माइनस P टोटल V. दोनों सब्सट्रैक्टिंग नहीं, डिवाइडिंग करो. Dividing 1 and 2. We will have just 1 minute. So as I was saying, dividing 1 by 2. What we are going to get? P1V divided by P total V is equal to N1RT divided by N1 plus N2 RT. P और V cancel out, RT RT cancel out. तो मुझे क्या मिला? P1 by P total is equal to N1 divided by N1 plus N2. इसको हम कुछ बोल सकते हैं, ये वाला टर्म जो है, what this term is representing?
What is it? Yes, good. Mole fraction. So I can write down P1 by P total is equal to N1 divided by N1 plus N2 है. That means it is the mole fraction of gas 1. And I can write down P1 is equal to X1 and P total. तो अगर मुझे मोल्स पता है, ओके, एंड मुझे बोल दे कि पार्शियल प्रेशर निकालो, P1 क्या है? P1 इज नथिंग बट अ पार्शियल प्रेशर, या फिर बोल दे P टोटल निकालो, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन एंड इन द सेम वे similarly we can write down P2 is equal to X2 P total. जितने भी number of gases है, we can find out by using this thing. So I can write down in general partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. पार्शियल प्रेशर जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल गैसेस. और अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि पर्टिकुलर गैस का परसेंटेज कितना है, देन परसेंटेज ऑफ एनी गैस इन मिक्सचर, जो भी मिक्सचर है उसका परसेंटेज पूछ दे. मान लो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, और पूछ ले हीलियम का परसेंटेज कितना है, तो जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से. और मोल फ्रैक्शन की जगह यू कैन आल्सो राइट डाउन जो भी उसका पार्शियल प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो भी उसका टोटल प्रेशर होगा multiplied by 100. From this you can find out the percentage of any gas in the mixture. Write down this, then we will do a question. Okay, चलो question करो. Let's say we have this container, okay, and it contains 16 gram of O2, 24 gram of CH4, 96 grams of O3, and 80 grams of SO3. Temperature is 227 degrees Celsius. Volume is 10 liter. And R का value आपको लेना है 0.08. Now calculate the mole fraction and partial pressure of each gas. जल्दी से solve करो within 2 minutes.
Okay, fine. This much time is enough. Let's solve the question. तो आपको बोला है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए. तो मोल फ्रैक्शन तो ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का है. इट शुडंट हैव टेकन मच टाइम. तो सिंपली अगर मान लेते हैं ये गैस 1 कंसीडर कर रहे हैं, 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली. ओके, तो मोल्स निकाल लो. N1 will be equal to 16 by 32. That is 1/2. N2 होगा 24 by 16. That is 3/2. N3 will be 96 by 48, which will be equal to 2. And N4 will be equal to 80 divided by 80. That is equal to 1. Now find out the mole fraction here. X1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2. अच्छा, इन सबको हमको ऐड करके लिखना है. दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4. इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू इज 5. सो दिस इज 1/2 डिवाइडेड बाय 5, which will be equal to 1/10. अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यू नीड नॉट टू सॉल्व टिल डेसिमल. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही रखो. Similarly, x2 you have to find out, that is 3/2 divided by 5. That means 3/10. X3 will be equal to 2 divided by 5. And x4 will be equal to 1 divided by 5. Is it clear? Now मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ वैल्यूज, सो दैट जब मैं एडिशन करूंगी तब इजी हो जाए. ठीक है, दिस 2/5 कैन बी रिटन एज 4/10. सेम बात होगी. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/10. सिंपली मॉडिफाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स by 2 for x3 and for x4 also, so that when I do the addition later on it becomes easy for me. यहाँ पे चाहे तो लिख लो and total is equal to 5. Now whatever the values are for x1, x2, x3 and x4, they all will be equal to 1. So x1 plus x2, because whatever the mole fractions you are taking, after adding them it will all, even if they are infinite in number, they will also be equal to 1 only. Now let's first find out the value of total pressure. P total here will be equal to N into R into T by volume V. N total, that is total number of moles, will be equal to 5 because I am finding out here total pressure. Value of R is 0.08. Temperature is given to you as 500 and volume is given to you as 10. This is cancelled out. 5 5 is 25 into 8. You will get 40/2. That is 20 atm. So total pressure is coming out to be 20 atm. Now you have to find out the individual pressures also. So we'll use the formula. P1 is equal to whatever the mole fraction it has multiplied by total pressure. That is 2 atm. P2 will be equal to 3/10 into 20. Calculation will become very easy if I am using denominator as 10. This is 6 atm. P3 will be equal to 4/10 into 20. That is 8 atm. And P4 will be equal to 2/10 into 20, which will be equal to 4 atm. So these are your P1, P2, P3 and P4 are the partial pressure. Is it clear everyone? And let me know if you have any doubts. Okay, so below this, write down small note here that gas having maximum number of moles
will have maximum partial pressure. Of course, you know that partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So if mole fraction is more, and how can be mole fraction more? When the number of moles is more for any gas. So if the number of moles are more, then that particular gas is going to have the maximum partial pressure. And you can also use this formula. If I take the ratio, then P1 by P2 will be equal to X1 by X2, which can be equal to N1 by N2. I have done nothing, like I have, let's say, P1 mole fraction P total equation 1, P2 mole fraction P total equation 2, 1 divided by 2. So I will have P1 by P2 is equal to X1 by X2, and X1 can be written as N1 divided by N total, N2 divided by N total. N total cancelled out. So this can also be written in the terms of number of moles. That is N1 by N. So depending upon the question, you can use the different formulas. So write down those. Okay. Our next topic is Graham's law of diffusion. First, write down the definition of diffusion. Like, what is diffusion? So, tendency of any substance to occupy all the available volume to itself is known as diffusion. It occurs, you might have studied this in 9th standard, okay? It occurs to solids, liquid, and gas. But its rate is maximum for gas. Okay, so suppose I have this container and I have a gas which is confined to this place, and somehow I open the knob from here. So what is going to happen? Here the pressure is high, and here that gas pressure is low. So the moment the knob is opened from here, this gas is going to spread to all over this container. And this method is known as your diffusion. You can also write down tendency of a gas to move from high pressure to low pressure until its partial pressure
becomes equal in both sides is known as so this movement of gases will take place until and unless the partial pressure of both the sides become equal. Write down this. Okay, next is your effusion. Effusion is the same as diffusion, but if the point from where gas is moving, it is very small area, then it is known as effusion. Rest is same. So movement of gas from high pressure to low pressure from a pinhole area, that is, you can say that very small area is known as effusion. So if any question asks you instead of diffusion, effusion, so it's the same thing, question will remain same. Nothing will change here. Okay. Now we will be finding out this uh, Graham's law of diffusion and the pressure involved here and at what rate the gases are moving. Okay. So let's take a case one. In case one, pressure is constant. Now, when pressure is constant, then according to this law, abhi tak we have only talked about the definition, diffusion and effusion. Now, what is Graham's law of diffusion? So, according to this law, rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its molar mass. This is the law, or you can say that density or vapor density. Under similar conditions of pressure and temperature. तो this is your case on जब हमने pressure को क्या रखा है constant रखा है. Now what the statement is saying कि अगर मान लो you have one container and in that two different gases are present. One gas will diffuse faster and the another gas will diffuse slower because the nature of both the gases are different. So the rate of diffusion, it is inversely proportional to the molar mass of the gas. And if I want to write it down, it can be defined or mathematically it can be written in this particular manner. Where P is the pressure, A is the cross-sectional area from where gas is coming out, T is your temperature,
and m is your molar mass. ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है बिकॉज हमने एज्यूम करके रखा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, एरिया इज आल्सो कांस्टेंट एंड देयर इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर. दैट मींस आई कैन राइट डाउन r is inversely proportional to the molar mass. And let's say I have two different gases. So for two different gases, r1 will be inversely proportional to m1 and r2 will be inversely proportional to m. दोनों को डिवाइड कर दोगे तो you will get, so r1 by r2 will be equal to 1 upon under root m1 divided by 1 upon under root m2, which can be written as under root m2 by m1. Acha, by the way, if there is root m1, let's say root m2, तो root never cancel out. Okay, root को आप cancel नहीं करते. Root will be under whole. So you are going to get this particular formula. And we had already said in the terms of density, same type का equation होगा, r is inversely proportional to under root d. Or for two different gases, I can write down r1 by r2 under root d2 by d1. Write down this. Now your vapor density we have talked about in mole concept. Mole concept में हमने पढ़ा था, याद नहीं है आपको? जो भी आपके पास प्योर वेपर होते हैं, प्योर गैसेस होते हैं, उसका जो भी डेंसिटी आएगा उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी. गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके जो वेपर फॉर्म में वॉट एवर द डेंसिटी इट हैज, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी. ओके, fine. So let's do one question. Calculate ratio of rate of diffusion of helium gas to methane gas. Find out. Next question. Ratio of rate of diffusion of helium, methane and SO.
Okay, Dhruv, your answer is right. Jaita is correct. Navya is correct. Reshma is also correct. Yes, Nazneen, your answer is also right. Good. Very simple sa question hai na, so we will not be wasting much of the time. So it's nothing but rate of helium divided by rate of methane will be equal to under root of molar mass of methane divided by molar mass of helium. Molar mass of methane is 16. Molar mass of helium is 4. 4 fours are 16. That is root 4 by 1. That is 2 is to 1. Yes, Navya, second answer is also right. लेकिन आपने गैसेस उल्टे पुल्टे लिया है क्या? लाइक पहले कोई और गैस लिया है, बाद में जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के हिसाब से आपको हमेशा रेशियो निकालना चाहिए. Okay, fine. So now rate सिंपल रेशियो में. रेशमा हमेशा आंसर सिंपल रेशियो में होना चाहिए. Now we know that rate is directly proportional to one of this molar mass, okay, which can be written as rate is equal to K molar mass. K is what? It is a constant value. जिसमें प्रेशर था और टेम्परेचर था, आर का वैल्यू था, एवरीथिंग सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उन सबको कांस्टेंट लेके हम चल रहे. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. फॉर हीलियम के लिए आई कैन राइट डाउन कांस्टेंट अंडर रूट 4 इज टू कांस्टेंट अंडर रूट 16 is to constant under root 64, which can be written as k और k तो cancel हो जाएगा तीनों में. So this will become 1 upon 2 is to 1 upon 4 is to 1 upon 8. And ये फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से. Multiplied by 8. 8 by 2 will become 4. 8 by 4 will become 2 and 8 by 8 will become 1. So ratio will be 4 is to 2 is to 1. You always have to convert it into a simple ratio. Always. Usually perfect square ही मिलेगा संपदा. Mostly perfect square मिलेगा आपको. पर ऐसा भी केसेस हो सकता है जब ना मिले, है ना. There is no guarantee. Then you have to use your mathematical sense to find out the root, है ना. रूट निकालने आता होगा किसी भी चीज का. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Rate of diffusion of an unknown gases 1.73 times smaller than oxygen. Calculate molar mass of unknown gas. Solve करो.
रेशमा's आंसर इज राइट, जयता इज करेक्ट, ध्रुव आपका आंसर रॉन्ग है, संपदा इज आल्सो राइट, स्निग्धो का आंसर गलत है। चलो देखो इधर, क्वेश्चन इज सेइंग दैट rate of diffusion of an unknown gas is 1.73, ठीक है, रेट का वैल्यू उसका गिवन है, so 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन द ऑक्सीजन। तो जो भी रेट है आपके पास अननोन गैस का, मैं यूजी लिख रही हूँ, दैट मीन्स अननोन गैस, it is smaller than this one, that means it rate of O2 is larger than this one by 1.73 times. Is it clear or not? अगर बोल रहा है 1.73 टाइम्स स्मॉलर है O2 से, तो इसका मतलब है कि O2 का 1.73 टाइम्स ज्यादा है अननोन गैस से, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 1.73 से। रेट ऑफ अननोन गैस मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज सॉरी 1.73 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 का वैल्यू होता है 1.7, which can be written as R by O2 divided by R by unknown gas, which can be written as molar mass of unknown gas divided by molar mass of O2. That means √3 will be equal to molar mass of unknown gas divided by molar mass of O2, that is 32. स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय 32, that means simply molar mass of unknown gas is equal to 32 into 3, which is 96 gram per mole. क्लियर है? ग्रुप समझ में आया क्या गलती कर रहे थे? तो what do you are saying? Should we always take molecular mass of O2 means? मैम हमेशा क्या वो 2 को कंसीडर करना है या फिर हम लोग ऐसे O को सिंपली कंसीडर नहीं कर सकते मैम? गैस बोला है तो ऑक्सीजन इंडिविजुअल O के फॉर्म में तो रहता ही नहीं है कभी, क्या कभी एग्जिस्ट करेगा? रियलिटी में अगर आपको कंपेयर करना है तो इट इज एन O2 गैस ओनली ऑलवेज, until and unless वहाँ पे मेंशन हो कि हाँ आप नेसेंट ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नाउ आप हमने यहाँ पे देखा कि मोलर मास और डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, बट हम और भी कई तरीके हैं जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिलेट कर सकते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ रेट, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, determination of rate of, so they can be measured by 3 methods, can be measured by 3 methods. First is volume diffused per unit time, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड ले रहे हो, पर मिनट ले रहे हो, जो भी आप ले लो, पर आवर ले लो, उसमें कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है उससे भी हम रेट निकाल सकते हैं। तो हियर रेट कैन बी इक्वल टू कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हुआ है, वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसको लगा है। वी कैन राइट डाउन रेट इज इक्वल टू डी बाई टी, एंड हमको ये पता है कि अगर 2 गैसेस के लिए हम ले रहे हैं तो R1 by R2 इज इक्वल टू M2 by M1 होता है,
अब मैं उसको बी और टी के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, तो v1 by t1 डिवाइडेड बाई v2 by t2 सिंपली। ये हो गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सेकंड केस इज विद रिस्पेक्ट टू कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है गैस ने। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, r इज इक्वल टू d बाई t। दो गैसेस के लिए अगर हमको करना है तो r1 by r2 इज इक्वल टू m2 by m1 होता है, which can be equal to d1 by t1 divided by d2 by। एंड थर्ड हम उसको कर सकते हैं कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं पर यूनिट टाइम में। मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, rate here will be equal to moles diffused divided by time, which can be written as r1 by r2 is equal to, like sorry, r will be equal to n by t। और अगर दो गैसेस के लिए लेना है so r1 by r2 will be equal to m2 by m1 will be equal to n1 by t1 divided by n2 by। देखो इसे, okay चल, let's solve some questions here। We have if 20 gram of helium diffuses through a hole in 10 seconds, then calculate mass of SO2 gas diffused from the same hole in 15 seconds। One second, guys. Solve this question। Sorry। Solve these two questions and give me your answer।
चलो लेट्स डिस्कस इट। रेशमा का आंसर करेक्ट है, मौर्य का भी करेक्ट है। जो रॉन्ग है नव्या, यू आर राइट। स्निग्धो का रॉन्ग है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 20 ग्राम ऑफ helium diffuses through a hole in 10 seconds. Then calculate the mass of SO2 gas diffused from the same hole in 15 seconds. तो मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लेते हैं। 20 ग्राम्स गिवन है तो मैं उसके मोल्स निकाल लेती हूँ। 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 5 मोल्स। ओके, ग्राम्स के रेस्पेक्ट में हमने कोई भी रेट नहीं किया कि कितना ग्राम डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, मोल्स के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में किया। तो नाउ ये हमारे पास 5 मोल्स आ गया। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 will be equal to the molar mass of SO2 which is 64 by the molar mass of helium that is 4, which will be equal to 8 by 2 that is 4 by 1. Now this can also be written as in the terms of moles diffused, है ना? Rate of helium divided by rate of SO2 can be written as moles of helium in one time of helium जितना भी लग रहा है उसको, and moles of SO2 divided by time of SO2 whatever time it is taking. So moles of helium is your 5 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ SO2 मेरे को नहीं पता बट टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। इट विल बी इक्वल टू 4 by 1. From here you can find out the number of moles of SO2 which is equal to 60 sorry हो गया 15 by 8. मोल्स कैलकुलेट करोगे you will have it 15 by 8. एंड आफ्टर दैट आपको मास निकालना है। तो मास किसके इक्वल होता है? मोल्स into molar mass. Moles is 15 by 8, molar mass is 64. 8 8s are 64, 15 into 8, 120 grams. Is it clear? Understood guys? कोई डाउट है तो पूछो। नापिया क्या 600 कैसे आ रहा है? अंडरस्टूड? अभी कोई गड़बड़ तो नहीं? अभी तो क्लियर है? फाइन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में मास नहीं निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना भैया। क्वेश्चन देखो ना क्या क्या व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। दे आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मास, दे आर asking you to find out the volume. चलो next question is saying if 50 ml of H2 gas diffuses through a hole in 20 seconds, then calculate the volume of O2 gas diffused through the same hole in 30 seconds. Same type का question है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। So rate of H2 gas divided by the rate of O2 gas इसके इक्वल होगा उनके मोलर मास के, मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मोलर मास, that is 6 under root 16 by 1 that is 4 by 1. एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो V1 by T1 V2 by T2 इज इक्वल टू R1 by R2, यही होता है। तो वॉल्यूम कितना डिफ्यूज होगा? पहले के लिए 50 डिवाइडेड बाय 20 एंड दूसरे के लिए आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 30 व्हिच विल बी इक्वल टू 4 by 1. कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस 5 by 2 into 30 by V is equal to 4. We have 15. That means volume will be equal to 5 into 15 by 4, which will be equal to 18.75 milliliter. Clear?
लिख दो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आपने। ओके, एक और क्वेश्चन करो, होमवर्क में करना, बस लिख लो। x ml of H2 diffuses through a hole from a container in 5 seconds. Time taken for the diffusion of same volume of gas specified below under identical conditions is 10 seconds for helium, 20 seconds for O2. C is 25 seconds for CO2 and D is 55 seconds again for CO2. आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइम टेकन फॉर द रिस्पेक्टिव गैसेस करेक्ट है। एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क के लिए। यू हैव दिस ट्यूब, ठीक है, लंबा सा ट्यूब है, यहाँ से आपने NH3 गैस पुट किया है और यहाँ से HCl गैस आपने पुट किया है। ओके, जेई का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। आपको ये बताना है एट विच पॉइंट white fumes will appear. ओके, इनके बीच का ये जो होल डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, बी एंड सी। कौन से पॉइंट पे ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है सी एंड डी को। ओके, तो फ्यूम्स कैसे आएंगे, आपने NH3 लिया हुआ है, HCl के साथ जैसे ही वो कंबाइन करेगा इट फॉर्म्स NH4Cl और NH4Cl के वाइट फ्यूम्स हमको मिलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और किसी भी लेट्स से सी और बी दोनों पॉइंट पे आपको फ्यूम्स मिलने वाले हैं। ओके, लिख लो क्वेश्चन से क्वेश्चन, देन आई विल एंड द सेशन।